ठीक है. सो साद, अजीम, अमन. सो बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग, एक एक मिनट अपने बारे में बता दो. कहाँ से हो, क्या चला, कौन सी कंपनी है, क्या करते हो? Hi, I'm Saad. I'm founder and CEO of Seri. I run an AI company which helps brands scale their WhatsApp marketing without ever getting their accounts blocked. I'm from Haldwani. We started this company 3 years back. Now it's a profitable business. We are serving 100 plus enterprises across India and Middle East. This is Azim. I'm the co-founder and CEO of FlexiPay. Technically, I'm an AI engineer, but I'm not running an AI company. We work with 500 plus D2C brands across all the industries. We have almost 100 million plus shoppers. It's been almost 3 years. I come from Lucknow. That's all about me. Hi, my name is Aman. I'm founder of Zenopay, and I come from Tier 2 city Kanpur, and I had an ambition to just like build something from straight out of college, and then out of college I started building, like helping others to build their product, and in that journey I like did a lot of like startups and also helped others to build. Currently, I'm building Zenopay. It's a fintech company. We are trying to build a stable coin infrastructure company, and we do also have our own like products which enable travelers to make QR payments across Southeast Asia. तो अभी तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दिया. इतना इतना फॉर्मल नहीं रहना है. ठीक है. वी वांट द गोल ऑफ डूइंग दिस इज टू मेक अर्ली स्टेज फाउंडर्स जो कि आइडिया में हैं या फिर पीपल बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, वो समझे कि स्टार्टअप बनता कैसे है, एंड मोर अबाउट कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि तुम लोग क्या करते हो. सबको पता है, सब गूगल कर लेंगे. ठीक है. पर तुम लोगों ने क्या ऐसा किया कि जो बाकी लोग करें ताकि they are able to build a startup? That is the main motive of this. So the very first thing I will talk about ki there's always a debate between that we need a CTO and a business co-founder combination to run a startup. When I started, I didn't have CTO. Like I was solo founder. I give someone my particular product to build a product. I means वो team member जैसे ही था मेरा. बट कभी ऐसा रियलाइज नहीं हुआ कि मुझे टेक को फाउंडर चाहिए. बट फंड रेजिंग के टाइम पे ये प्रॉब्लम आती थी. सो फ्रॉम योर टेक, व्हाट इज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फाउंडर्स. क्या जरूरी है कि किस टाइप के फाउंडर्स स्टार्टिंग में होना चाहिए कि कंपनी लंबी चलेगी. विल कीप इट वेरी शॉर्ट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन पॉइंट ऑफ व्यू. विल डीप डाउन मोर इनटू डिफरेंट थिंग्स ओवर द टाइम. ठीक है. Cool. I think I should go ahead. So we are building a SaaS company, right? So where there are two major things when it comes to SaaS business. One is someone who can actually build the product because it's a pure software as a service company, right? The stage where we are at, the company where we are working, and FlexiPay in this case, it's very important that you have two team members. One, someone who can focus specifically on tech because the moat of the product would be tech itself, right? The second one would be someone who can sell the product what the CTO is building. So in our case, I would highly recommend कि obviously you have two people at least in the team, one you and your co-founder working on a product and someone who is selling. Cool. I have a different perspective on this. So I'm also running an tech company और हमारे पास CTO नहीं है. Plus I don't think हमें CTO की ज़रूरत भी है अभी. What we need right now, or what you start in general, when you're just starting up, if it's a tech company, you need a very good developer to work with you. That developer may or may not be your CTO. हर developer अच्छा CTO नहीं बन सकता. So when we started, we had a good developer, but he didn't turn out to be the best CTO we could have. So that's how it started. उसके बाद से फिर we realized कि at different stages we required a tech team lead. So some of our developers, so we have always tried to hire the best developers we can. और ऐसे लोग जो खुद को खुद मैनेज कर लेते हैं, जिनको माइक्रो मैनेज नहीं करना पड़ता. तो वहाँ पे हमें अभी तक भी CTO की रिक्वायरमेंट नहीं आई है. आई थिंक CTO इज समवन विच यू रिक्वायर एट अ वेरी लेटर स्टेज. यू आर वेरी लकी इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ पर्सन फ्रॉम स्टार्ट. बट अगर नहीं है तो ज़्यादा परेशान ना हो. जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अच्छे डेवलपर्स वगैरह हैं, उनके साथ शुरू करें. एंड इवेंचुअली इधर वन ऑफ देम विल शो पोटेंशियल टू बी ए CTO. और जब आप बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, आपके पास स्केल है, पैसा है, तो आप एक अच्छा फॉर्मल CTO हायर कर सकते हैं. तो बट तुम्हारे केस में तो ये प्रॉब्लम आई थी ना कि तुम्हारा CTO बीच में, मतलब टेक लीड जो था, बीच में वो ड्रामे करने लगा था, फिर तुम लोगों को उसको हटाना पड़ा था. तो जब वो ऐसा सिचुएशन आता है एक स्टार्टअप में, तो हाउ डू यू
tackle that? I think कि this is a problem of almost every startup, right? So CTOs are migrating birds, I should say, right? कि आज वो एक startup में है, कल वो startup में है, but I would love to know कि क्या हुआ था in your के साथ. Cool. In our case, the guy we were working with was a and is a very good friend. He's a very strong developer. But as the company grows, sometimes you realize कि जो आपके 0 to 1 में 7 लोग थे, वो आपको चाहिए थे सारे हसलर्स और एग्जीक्यूटर्स. जब कंपनी 1 to 10 वाली स्टेज में जाने लगती है, उस ट्रांजिशन में आपको वो लोग चाहिए होते हैं जो टीम्स को मैनेज करें और लीड करें. तो उनका जो मैनेजमेंट और लीडरशिप था, दैट वाज डिबेटेबल. तो उसमें प्रॉब्लम क्या था कि वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे. तो और ये मेरे सारे को फाउंडर्स के साथ हुआ, बिकॉज ऑल ऑफ अस वर वेरी यंग. और 22-23 साल के लड़कों से आप एक्सपेक्ट करोगे आप एक कंपनी चला रहे हो, तो बहुत अनफेयर एक्सपेक्टेशन है. तो हम सबके साथ प्रॉब्लम्स आई. तो उनके साथ भी यही किया. तो फर्स्ट कॉल्ड स्टेप ऑफ एक्शन वाज टू बी वेरी कैंडिडली ऑनेस्ट विद हिम कि ब्रो दिस इज नॉट वर्किंग आउट, ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं. सो वी गॉट अ टेक एडवाइजर ऑन बोर्ड कि आप इनसे डिस्कशंस करो, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इनसे कंसल्ट करो. फिर हम लोगों ने वैसे 3-6 महीना ट्राई किया, दैट डिडंट वर्कड आउट. उसके बाद भी मतलब आई स्टिल फील कि हैज़ अ लॉट ऑफ गुड पोटेंशियल, बट द कॉन्वर्सेशन वाज कि इट्स वेरी अनफेयर फॉर मी टू एक्सपेक्ट कि फ्रॉम अ डेवलपर आप 6 महीने में अच्छी CTO या फिर एक अच्छे टेक लीड बन जाओगे. बट सिचुएशन वही है एंड यू डिजर्व अ चांस, बट आई डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज टू गिव अनदर चांस. तो हमारे पास एक लिमिटेड रनवे है. तो उस वजह से फिर वी हैड टू पार्ट अ वेज. वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स, वी स्टिल रेफर ईच अदर वर्क्स एंड क्लाइंट्स वगैरह. बट वो हम लोग को क्लियर हो गया था कि ही स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेवलपर, बट मे बी मैनेजमेंट साइड उनको पॉलिश करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, मैं यहाँ पर इसका भी मैं देखा, सिंस आई नो अमन आल्सो, अमन इज आल्सो बिल्डिंग समथिंग इन टेक. इसके साथ भी सेम सिचुएशन हुआ है कि CTO धोखा देके भाग गया है. So I have been myself as a CTO as well, and previously like I've helped others to build their product, right? And when you're starting up, you can't say that I am the CTO and I am the CEO when it's your idea, right? So the current product which I'm building, I had really good friend of mine, right? And I built the team, and because I onboarded him as a CTO because he comes from the same industry where he is building for almost 6 years. So in fintech, the pedigree is really, really important, right? Investor doesn't trust you that easily, right? So if your CTO is from a like fintech company, so it adds more weight and the credibility, Yeah. right? So that's why I onboarded him. He was really like great friend of mine, and we had really good relationship. But eventually, what happened is I got busy in like fundraising, and one of our existing investor somehow like lured him like, hey, let's remove Aman. So that's a like different topic in the story, which I can share later. But the thing is, my perspective on this is like you need a reliable CTO, and it depends on the use case, like the what product you are building. And specifically my industry, fintech, you need really good like So CTO. now since you talked about ki investor lewd and investor wala problem bhi, so now this is another problem because CTO problem is always there. Yeah. In both of your cases that is a problem. In your case that is not occurred. हाँ, so बट मेजोरिटी ऑफ सिनेरियो में मैंने भी ये देखा है कि सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स भी बंद होते हैं क्योंकि एक दो फाउंडर स्टार्टिंग में लड़ झगड़ बैठते हैं. सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स वहीं पर बंद हुए हैं. इट्स नॉट अबाउट कि व्हाट दे वर बिल्डिंग, इट्स नॉट अबाउट कि वेयर दे कमिंग फ्रॉम, इट्स जस्ट ये होता है कि विजन अलाइन नहीं होता है, वो लड़ झगड़ बैठते हैं. बट इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आते हैं. सो नाउ सिंस ही टोल्ड अबाउट इन्वेस्टर्स, तो लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव इन्वेस्टर्स इन अर्ली स्टेज स्टार्टअप, नॉट एज इन जस्ट इन्वेस्टर बट टू मेक श्योर कि वो बात तक तुम्हारी कंपनी के साथ टिके. ऐसा ना हो कि मतलब हर चीज में अड़ंगा डाल रहे हो कि मतलब फॉर एग्जांपल तुम कुछ कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो, ना ऐसे मत करो, या फिर फॉर एग्जांपल तुम रेस कर रहे हो, ये मत करो. मतलब ऑन अ राइटर नोट बोल सकता है कि चलो ये मत करो, बट हमेशा ऐसा होता है कि कभी कभी किसी चीज को उसके वजह से रुक जा रहा है, साइन नहीं कर रहा है ऐसे कि दूसरे राउंड नहीं हो रहे हैं. सो हाउ इंपॉर्टेंट डू यू गाइस फील कि जो पहले सेट ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पहला राउंड रेज करते हैं, all of you have raised, all three of you have raised, उसमें क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए? You want to go first? Yeah, very interesting. So when it comes to CTO wala part, I'll tell one good story. So I also started a company in my college days, and that company got shut down because two co-founders fought with each other, right? But in our case now, what is the best part, and we are fortunate enough, I should say, is कि we have Bishwa, who's the CTO of the company. The plus part is he takes care of the product, and then he knows his things very, very well.
he doesn't come to me saying, hey, why are you onboarding this brand, and I don't telling him, hey, why did you build this feature? Okay, so it has been very, very simple. You manage the tech team, I take care of the business and sales, right? So it's good. When it comes to the investor part, see, we have not raised from an institutional investor, so ours are mostly angels, and they We are will there. talk about angels first, okay? Yeah. क्योंकि पहले rounds angels से ही करते हैं Yeah. most of the cases में. We'll also talk about the angle of how to move from institutional angels. Sorry. I think for the institutional part, you people would be the best person to talk about. But for angel round, what happened is one of our customer whom we were pitching as a partner, they liked our product and they were trying to build something similar for international markets. They work with big brands like Justin Bieber ka D2C and Rihanna ka D2C. They work with brands like that. The problem what they were facing, and they process, by the way, 1 billion plus transaction into logistics a year, right? And they were trying to build something to crack the outside international market, and they saw an opportunity that we are building in India. We have already solved this problem for Indian merchants. If they can come on board, obviously no one has time to build the product entirely with the team. Everyone is occupied with their own things. So they invested with us, and now we are sort of expanding our businesses into international, sort of following 50% of their vision and 50% what we had. This is about me. Cool. Basically, like Azim bhai, even I'm very fortunate to have the right co-founders right now. So, abhi I have two co-founders, Vasil and Shubham. So Vasil takes care of the product. Even if I don't ask him महीनों तक कि प्रोडक्ट में क्या चल रहा है, आई एम श्योर जब मैं 3 महीने बाद भी पूछूंगा तो आई नो यार इतनी प्रोग्रेस हो गई थी, इतने फीचर्स बन गए थे, कस्टमर्स का फीडबैक ये था. सेम विद शुभम, इवन इफ आई डोंट बॉदर टू आस्क हिम क्या चल रहा है, आई एम श्योर कि ही इज वर्किंग ऑन समथिंग एंड दैट्स हाउ दे ट्रीट मी एज वेल. सो व्हाट आई बिलीव इज इन फुल ऑटोनॉमी. So with investors as well, that's what I believe. So I don't want investors who would be interfering with my business. So recently when I was back in Dubai, I got an investment offer for about 20 lakhs, not a big amount, but the investor wanted to be an active investor. और मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो बिजनेस है मैं 3 साल से चला रहा हूँ, तो आई हैव इनफ कॉन्टेक्स्ट एंड आई नो व्हिच डिसीजंस माइट बी राइट. I will just ask this question कि for example अभी वो 3 साल बाद ये बोला कि आई वांट टू बी एन एक्टिव इन्वेस्टर, अभी शायद नहीं चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब पहला मान लो कस्टमर नहीं है, प्रोडक्ट बन रहा है, तब का इन्वेस्टर का इन्वॉल्वमेंट, व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टर यू शुड हैव? I think that may depend person on person. Basis who I am, I would prefer an investor who could be very helpful, who can be a strategic investor. Like you were the first investor. मैंने मत बोलो. So I can chime in ठीक है, here. इसको कंप्लीट करने दो. Like you were the first investor और उस टाइम पे I had lot of things to learn. जैसे प्रोसेस कैसे सेटअप करना है, टीम कैसे करना है. I was doing lot of fuck ups in lot of things and you like guided me through all of those things. किससे बात करना है, किससे नहीं करना है. So that opened a lot of opportunities for me. बहुत सारी चीज़ हमने कोर्स करेक्ट कर ली टाइम से. अदरवाइज हम लोग बहुत पहले ही शायद शट डाउन कर गए होते. तो सेम आई थिंक कि अगर बाकी इन्वेस्टर्स भी ऐसे हैं, मतलब स्ट्रैटेजी का मतलब वो नहीं कि कुछ स्ट्रैटेजिक वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आपका उनके साथ वाइब मैच होना चाहिए इन जिनसी टर्म्स और यू शुड हैव अ गुड बॉन्ड विद देम. तभी अगर वो आपको डांटेंगे तो आप उसको कंस्ट्रक्टिवली फीडबैक की तरह ले पाओगे और अगर आपको कुछ बोलेंगे तो आप उनको अच्छे से समझ के रिस्पॉन्ड कर पाओगे. अगर इन्वेस्टर आपके बॉसी टाइप के हैं कि ये करना है ये नहीं करना है, तो वहाँ पर आई थिंक यू एज अ फाउंडर यू लूज द ऑटोनॉमी. और अगर आपके अंदर वो पीपल प्लीजर वाली चीज़ है कि इन्वेस्टर ने बोला करने का तो करने का, तो आई थिंक यू आर डूम टू फेल. क्योंकि इन्वेस्टर को उनको अपना फंड का रिटर्न देना नहीं है, वो तुम्हारा धंधा तुम्हें कैसे बता देगा कैसे चलाना है. तुम 3 साल से करके अगर तुमको इनसाइट नहीं मिला है और वो 10 मिनट में दे रहा है, तो या तो तुमने ढंग से सोचा नहीं है या फिर वो इनसाइट बेकार है. आई थिंक डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए. यू शुड गो टू इन्वेस्टर्स एंड एडवाइजर्स फॉर चेकिंग कि तुम्हारे थॉट प्रोसेस में कोई ब्लाइंड स्पॉट्स हैं क्या, कि आपको एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो तुमने मिस कर दिया जो उनके एक्सपीरियंस में उन्होंने देखा हो. Otherwise, if you let anyone else make decisions for you, that's a recipe for disaster. Your views, Aman. So my like recent learning from like the recent raise which had, and it is like manage your expectations very early on. Yeah. Sometimes some angel investors come in, they are excited about the product and you know them really well. So my previous investor, we knew each other, we worked together, right? And he was excited about the product which I was building. So he said, hey, this is like $50,000 check right here. So I was like, okay, that's insane. So I quit my job. I was working there as a CTO, and I started building. So eventually, over the like 3 to 6 months down the line, when we built the product, we launched it, and it was a success. To be honest, like we had PMF in just 2 weeks, right?
So then it somehow like changed his mind, and he wanted to now become the CEO of the company. So that is like kind of a shocker, right? So I expected him to be like investor, but eventually he thought like he can run the company better than me, and he wanted all the company. Then he like kind of tried to do the hostile takeover, that either give my money back or give me the company. So this is a really dicey situation. How did you tackle the situation when your investor tried to threaten you with all these things in terms of either give the money or just like leave all these things, and also he also encouraged other team members to leave you, or Yeah, that situation so actually. my co-founder sided by him, my like the founding engineer sided by him, and I was like on a blind spot, like alone. So luckily I was able to like first of all, you need to have advisors, good advisors. You should talk as many as people you should, right? Don't shy away, like मैंने इससे बात करी, इसको बताया, तो maybe like he can steal my idea. So back then I was like in SF traveling and fundraising, and so I talked so many people, and there was one guy, so he was a third employee of PayPal, and he was like senior product manager. Right now he is a VC in Boston. So I met him, I told him everything, and the funny thing is the investor who like invested in our company, he invested without even any paperwork, without even like any NDA, like nothing, right? And it was like completely on trust. So that is the one thing, like one learning: never ever take money without any paperwork. So I was about to, I think, say the same thing, that hostile takeovers and everything would happen when you have some loose ends on your side, right? You have to write everything down. So with our angels, what we have done is a very simple clause, I should say, ki we are building a checkout company, we will be building a checkout company, just in case there would be a pivot, okay, that should be in terms of related to e-commerce specifically, right? If not, then they can come and they can ask for their money back, right? So there's a clear requirements, NDAs, agreements, whatever we have signed it very clearly. And in this case, the good part is they don't care about what we are building. They just, and the good part for us is we have almost weekly, bi-weekly sync-ups, right? The one thing we discuss is the risk factors in this business. How can we grow? What are the risks? How can they help to bring more people? That's all we discussed. I mean, you won't believe, in last 1.5 years, they have not asked me about my numbers also. They are like, you people are doing good, you will be doing good. The company is not, I mean, we tell them, obviously, this is the bank balance, this is X month of runway we have, right? That is all they need to know. It's going pretty well. There is no problem with my employees, there is no problem with my CTOs, CEOs, nothing like that. So I can just like answer that, like how I navigated this. So the thing is, like, because nothing was on paper, right? And when I met this VC in Boston, so he somehow, like, I told him like how we are working, we have like this investor, and there are a lot of red flags which I couldn't see because I blindly trusted that guy, right? Because we worked earlier together, and because he has some credentials. If you go and just check his profile, so he has really good credentials, so anyone can just fall for it, right? Yeah. So I was also that guy. So then I told like, this is how we are working, and there is no like paperwork, and how he's like investing, like he's putting like direct like bank transfers to us, right? So then he spotted, he said like, he's gonna make a point that you are an employee, you're not an like founder, and he is the founder. And that's what happened. Iska situation, according to his situation, what happened with him is like he took the money in the personal account, for example. Now you all three, I think all for 3 years you guys have been founder, right? 25, 26 age है तुम लोगों का. So the situation arises, no one knows in India, like for example कि how to take money. Yeah. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है सबसे ज्यादा कि when you take the first round of money, people think कि मेरे पास proprietorship है या LLP कंपनी है तो I can take the money, और लोग पर्सनल में लेकर फिर कुछ ना कुछ मतलब हाँ कुछ ना कुछ ड्रामे होते हैं उनके साथ. तो and some of the cases arises कि वो सामने वाला इंसान बोलता है कि मैं से पैसे भी ले लो और मैं से प्रोडक्ट्स भी ले लो. अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग में हो, इफ यू आर इनटू सम काइंड ऑफ अ सिचुएशन, बट यू ऑल थे इन सॉफ्टवेयर बिजनेस, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन विल नॉट बी अराइज, फॉर एग्जांपल. तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू टैकल दिस कि इनिशियल डेज में जब वी रेज मनी, वेयर डू यू गो एंड व्हाट डू यू हैव लर्नड इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ फर्स्ट 6 months व्हेन यू थॉट कि अब हमें रेज करना है?
Cool. So in my case, since I was very clear from day one, What was the year actually? You tell the year also, tell the timeline of that 6 months, so and make it very crisp so that people will understand this in better way. cool. So I started thinking about starting this company in July, and that's when I started market research. पहला 3-4 महीने I did nothing else. July 2000? 22. पहला कुछ महीना did anything apart from market research. फिर एक प्रोटोटाइप बना के लॉन्च किया अक्टूबर के आसपास. That's when I connected with ऋषभ भाई. तब तक कंपनी रजिस्टर भी नहीं किया था, मतलब प्रोसेस में था. So that's when ऋषभ भाई offered me my first check. और आई वॉज वेरी क्लियर कि फंड रेज तो करना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट हैव इनफ मनी टू बिल्ड अ कैपिटल. आई वाज जस्ट फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज. तो फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से स्टार्ट करना है क्योंकि खर्चा ज़्यादा आएगा बट अल्टीमेटली वो करना ही है. सेकंड थिंग इसके अकाउंट खुलवाने के साथ साथ ही शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का प्रोसीजर स्टार्ट करा दिया क्योंकि जैसे एक बार पहले हैड रेस फंड्स, आई नो कि फंडिंग आएगी तो शेयर के एप्लीकेशन अकाउंट में ही आएगी. तो बहुत कुछ चीज़ें थी विच ये तुम्हें कौन बताया? इसके पहले व्हेन आई दिस वाज माय सेकंड कंपनी. उसके पहले मैंने डिड तो मेरे को जीपे के अलावा बैंक के अलावा कुछ नहीं पता था कैसे करना है. फिर मुझे पता स्कैन करके पेमेंट होती है. तो उस टाइम पे आई हैड मेजर फकअप्स. एक एक्सिस बैंक वाला बहुत क्रेजी वायरल फियास्को हुआ था, तो वहाँ पे आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो सारे खुद की ही गलतियों से था कि इस बार सारी चीज़ें प्रॉपर करनी है. अक्टूबर में स्टार्ट किया, नवंबर कंपनी रजिस्टर हुई, जनवरी में वी गॉट फर्स्ट सेट ऑफ कमिटमेंट्स, मार्च से ग्राउंड क्लोज हो गया था. ऑल बिकॉज आई वॉज प्रिपेयर्ड ऑलरेडी कि क्या करना है कैसे करना है. बट उसके पहले जो ड्रामे तुम्हारे साथ ऑलरेडी हुए हैं उसके बारे में बताओ थोड़ा सा. उसके पहले मेरे साथ फर्स्ट टाइम में ही लेवल 10 चला गया था. तो मैं इन्वेस्टर वॉज एन मलेशियन इन्वेस्टर. उनका जो पैसा आ रहा है वो एफडीआई है. एंड एज आई टोल्ड यू कि मुझे कोई आइडिया नहीं है We have faced the same. कि एफडीआई कैसे लेते हैं. मेरे को यूपीआई चलाना नहीं आता ठीक से. तो बेसिकली उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए. अब हमारे पास 1 महीने तक हम लोग बैंक के साथ फॉलोअप्स कर रहे हैं. पहले तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट खुलवाया, आई डिडंट नो कि करंट अकाउंट में नहीं ले सकते. दूसरा प्रॉब्लम ये कि जब आप एक एफडीआई करते हो तो इंटरनेशनल बैंक जो होता है, जैसे उनका करेंसी मलेशियन करेंसी था, हमारा इंडियन करेंसी है, तो वी डोंट ट्रेड विथ ईच अदर. तो एक न्यूयॉर्क में एक सिटी बैंक था, वहाँ पे उन्होंने करेंसी एक्सचेंज करा, फिर वहाँ से आना था. तो बीच में एक इंटरमीडिएट बैंक आ जाता है, तो उसकी वजह से जो स्विफ्ट मैसेज होता है वो आने में बहुत टाइम लगता है. हमारे केस में दैट वॉज टेकिंग अ मंथ. और आई वॉज अगेन वेरिंग, आई वॉज 19 years old व्हेन आई रेज दैट फंड. तो आई डिडंट नो कि कंपनी तब तक चलाएंगे कैसे. और इन्वेस्टर का लाइक कि मैं तो जा रहा हूँ फ्लोरिडा, तो अगर ये तुम्हारा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो मैं 3 महीने तक नहीं कर सकता. और आई वाज लाइक यार हम लोग तो हायरिंग मीटिंग भी शुरू कर दी थी बिकॉज आई वाज वेरी मैच्योर. आई वाज लाइक इन्होंने बोला इन्होंने पैसे भेजे तो आ जाएंगे मेरे पास. मेरे को तो भी लगता था जीपे में तो ऐसे ही होता है तो वैसे पैसे आ जाएंगे. 1 महीने तक नहीं आए. फिर एक्सिस बैंक के साथ आई वाज ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट डेली. जो मलेशिया की सिटी बैंक टीम थी वो भी कोऑर्डिनेट करना चाह रहे हैं. एवरीबडी इज कोऑर्डिनेटिंग एक्सेप्ट द एक्सिस बैंक. और लास्ट में एक्सिस बैंक मुझे मेल करता है. एक्सिस बैंक हमें उठा के ले जाएगा. This is very interesting. I think something has happened very similar. इसको कंप्लीट कर देते फिर उसके बाद उसमें ऐड करना इसमें. तो एक्सिस बैंक का फिर मुझे 38 डे या 29 डे पे मेल आता है कि बिकॉज ऑफ कुछ मेरे ऊपर उन्होंने डाल दिया था कि लैक ऑफ यू हैव नॉट प्रोवाइडेड अस डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी थे. उनके साइड से टेलेक्स मैसेज नहीं आया था, तो वो रिसीव नहीं कर पा रहे थे. सिटी बैंक कह रहे हमने भेज दिया है, तो हम लोग की ट्रांजेक्शन प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, तो ये रिफंड हो जाएगी, मतलब रिटर्न हो जाएगी. तो वहाँ पे इट गॉट मी फ्यूरियस कि 30 दिन से मैं तुम्हारी मजदूरी कर रहा हूँ, तुम्हारी टीम के साथ काम कर रहा हूँ अपनी टीम को छोड़ के, और तुम मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो कि पैसे नहीं आएंगे. तो वो पैसे आए कि नहीं आए? तो उसके बाद हमने क्या किया. सो आई स्पोक टू वन ऑफ माई एडवाइजर्स. शी वॉज चीफ कमर्शियल ऑफिसर बैंक ऑफ आईसीआईसीआई बैंक. तो आई कॉल्ड हर कि क्या करना चाहिए. शी सेड कि बेटा तो बैंकिंग प्रोसेस है, कुछ नहीं कर सकते. आई कॉल्ड कपल ऑफ अदर एडवाइजर्स, एवरीबडी रिकमेंडेड द सेम कि बैंक का प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा. बट आई वॉज लाइक यार मेरा तो कट जाएगा ऐसे, मैं क्या करूँगा, इतने लोगों को तो 2-3 लोगों को हायर कर देंगे, पैसे कैसे देंगे हम. तो आई डिसाइडेड टू गो ऑन ट्विटर. तो एडवाइजर ने सबने मना किया कि ट्विटर पे करने कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाइक आ जाएंगे और वायरल भी गया तो तुम्हारे पर वो लॉ सूट वगैरह कुछ हो जाएगा. तो आई कंसल्टेड अ लॉयर कि देखो ये मैंने ट्विटर पर डालने के लिए थ्रेड लिखा है, आप एक बार फैक्ट चेक कर लो कि ऐसा तो नहीं मैं कोई प्रोसेस को गलत समझ रहा हूँ या कुछ गलत हो रहा है. और एक मेरा फ्रेंड है मार्केटर, उसको कंसल्ट किया कि भाई इसमें कुछ क्रेजी स्टोरी बनाते हैं, उसको वायरल लेके जाएंगे. तो आई स्टार्टेड पोस्टिंग जोक्स अगेंस्ट बैंक्स ऑन ट्विटर. तो जिन जिन लोगों का लाइक और कमेंट आ रहा था उन सबका एक शीट बनाया और फैंटम मस्टर पर डाल के ऑटोमेशन सेट किया. फिर एक बड़ा थ्रेड डाला शाम को 7-8 बजे कि ये कौन सा दिन था, कौन सा साल, कौन सा दिन, कौन सा मंथ? 2021 की बात है. तो आई वॉज 20 years old. तो एक पूरा अच्छा सा थ्रेड लिखा कि हम लोग देश को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं मगर हमारे बैंक से अच्छे नहीं है. एक्सिस बैंक का टैगलाइन ओपन टू पॉसिबिलिटीज़, सो इट शुड बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ऑपरेशन एज वेल. इस तरह के जोक्स थे उसमें.
और एक पूरा अच्छा नैरेटिव था कि आत्मनिर्भर भारत ऐसे नहीं बन सकता जब तक हमारी जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सफिशिएंट नहीं हो जाती। फिर जितने लोगों ने लाइक और ट्वीट किए थे, रीट्वीट किए थे पोस्ट में, सबको ट्विटर पे डीएम किया ऑटोमेशन का कि हे आई सॉ दैट यू आल्सो फेस सम प्रॉब्लम विद द बैंक और आई आल्सो नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। वो अगले दिन तक वायरल चला गया। मीनवाइल मैंने एक्सिस बैंक के जो सीईओ थे उनको भी एक मेल किया कि सर हमारा ऐसे ऐसे प्रोसेस था पूरा, मैं आपकी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, ये लोग काम नहीं करा के दे रहे हैं, अगर 2 दिन में मेरा पैसा नहीं मिला मैं ऑब्जर्समेंट एक्ट के अंडर एक्सिस बैंक को अगेंस्ट केस करूँगा। उनको भी एक मेल कर दिया एज अ वार्निंग। अगले दिन सुबह एक्सिस बैंक के मैनेजर का कॉल आता है कि क्या क्या तुमने ऐसे क्यों किया और तुमने सर को मेल क्यों कर दिया। और लाइक भाई मेरा पैसा तो आ नहीं रहा, मैंने कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद उनके एक वीपी का कॉल आया कि सर हमने देखा था कि आपका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आया है, आप जो ट्विटर का थ्रेड है वो आप डाउन कर लो, हम आपका 2-3 दिन में पैसा रिटर्न करा दें, मतलब अरेंज कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, पैसा आ जाएगा तो मैं डाउन कर दूंगा। फिर उनके एग्जीक्यूटिव टीम से कॉल आया कि सर हम आपका आज ही आज में करा देंगे, आप प्लीज़ वो ट्विटर का देख लो। वो थ्रेड इतना वायरल गया, उसमें आम आदमी पार्टी के लोग और कौन थी यार जिसने स्कैम 1992 बस्ट कराया था, सुचेता दलाल, हाँ उसने रीट्वीट करके इतना गंदा गंदा लिखा एक्सिस बैंक को कि तुम लोग यही करते रहते हो, प्राइवेट कर दिया बैंकिंग को। बहुत वायरल गया वो, मिनिस्टर्स, जर्नलिस्ट सब लोग आ गए, अरफा खानम वगैरह, तो क्रेजी वायरल गया एक्सिस बैंक के अगेंस्ट। फिर और ज़्यादा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया, हैशटैग वायरल हो गया वो। उसके बाद फिर अगले दिन जन्माष्टमी की भी छुट्टी थी और बैंक हॉलीडे भी था। बट मुंबई वाला बैंक जहाँ से सेंट्रल बैंक है उनका और बरेली ब्रांच जिसमें मुझे पैसे लेने था, दोनों खुले हैं और छुट्टी वाले दिन हमारा ट्रांजेक्शन प्रोसेस कराया है। इंटरेस्टिंग। भाई तुमने मतलब बैंकिंग सिस्टम को हिला दिया 2021 में। ये कब, ये मैं तो देखा भी नहीं था जब ये सब आपको मिलने से पहले का ही है, ट्विटर पे मेरे उसमें पड़ा होगा ये। हम इतना कुछ नहीं कर पाए obviously. So our problem was कि one of our investors were from Hong Kong. So he's native from Canada, but the money he transferred via Hong Kong account. And Hong Kong comes as a border country of India, or because of these acts and all, we also did not know क्या होता है कैसे होता है। उधर से Hong Kong अकाउंट से हमारे ICICI में पैसा आ गया है। ICICI ने होल्ड करके रखा है, अगेन द सेम सिनेरियो ऑफ स्विफ्ट मैसेज एंड एवरीथिंग। 1 महीने पैसा वही कहीं तो बीच के अकाउंट में पड़ा रहा। 1 महीने के बाद मैंने कहा भाई इफ यू पीपल आर नॉट एबल टू प्रोसेस, जस्ट रिफंड द अमाउंट इटसेल्फ ना। द इन्वेस्टर इज आल्सो लूजिंग, आई मीन वी आर लूजिंग द क्रेडिबिलिटी एंड ही इज नॉट इंडियन, ही इज आल्सो फ्रॉम sort of a Canadian citizen, right? उसकी वजह से we did XYZ things and then now we received the money via one of his friend who is an Indian person, Indian citizen. उनके थ्रू उनके अकाउंट से आया। now we need to share the transfers to him and then transfer to the at the end to the actual investor. This has happened with us in ICICI, so I feel there is not much difference when it comes to Axis and ICICI. So in my case, like I was lucky, I don't have to deal with Indian banking because I incorporated my company in US. It's a Delaware C Corp, and there it's really smooth. You can just issue a safe note, and then nowadays they have solution embedded in their banking where you can just issue a safe note and the investor can like. So anyone who has registered their company in Delaware, if I am sitting in India, I have an Indian bank account. Yeah. If I invest in your company in that particular account, तो उसका क्या process है और क्या documentation लगता है? So I can like just normally I can issue a safe note that in that you can sign, and after signing that you will have a banking details. So we have an account with Mercury. So Mercury is a like neo banking and it's a really great experience so far we have. So I can issue a safe note via Mercury. You will receive it on your email. You can just go through it. You can just sign it, e-sign it, and then you will have an option to wire the money on that link only. So you can just do a SWIFT transfer from your. But me as an investor, when I transfer money to any company which is an unlisted company situated out of India, we need to do an LRS. In that particular case, the process is same or like it's different? So it depends. If you are transferring as an individual, then LRS is applied on you. So if you are transferring from like LLP, like some different structure where you are showing yourself as an entity, then that is a very different in India. If you talk about in your case also, then again it's the same problem. If you're taking an angel investor, if the particular person needs to transfer money to an US entity or any European entity, while transferring money, this LRS system is not just a system, it's a torture. I know. Okay, so they give us so there's a limit. So I think I don't remember the limit, but up to 3 lakh rupees kind of a thing, some kind of thing can be skipped. मुझे अच्छे से याद नहीं है, but still you need to have bunch of documents to be filed with the bank to transfer the money because it's an unlisted market. Exactly. So it depends. So I guess the limit is like
$10,000 which you can transfer, like around 7 or 8 lakhs, which you can send. And it depends also the category purpose code, like for which you are remitting this fund, right? So in that category, I guess there is like different slabs you have to pay. Like if you are breaching that LRS, so you have to pay like 20-30%. So I might be wrong. So but yeah, there is certain like regulations. So that's why even though we have a lot of commitments from India, they want to invest, but they want to invest in Indian holdco, because the banking and the entire regulatory stuff, it's such a headache. No one wants to like put money in outside of India. I think someone should start a startup to solve this problem. So many people have started a startup regarding this, transferring money from Indian company to overseas company. Many people have done this. The problem is not with the startup actually. क्योंकि क्या होता है कि ये थोड़ा सा ना B2C सेगमेंट में थोड़ा चला जाता है, एंड देन वो स्टार्टअप को दिखता है कि इसमें पैसे नहीं बन रहे, फिर वो कुछ और करने लगते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट, लैंडिंग वगैरह सब में घुस जाते हैं. दिस इज अ कैटेगरी विच कम्स इनटू ट्रांजैक्शन बैंकिंग की, क्योंकि एनीथिंग मनी विच फ्लोज क्रॉस बॉर्डर में चलता है तो उसके बहुत रेगुलेशंस हैं. इन इंडिया व्हेन यू वांट टू सेंड मनी फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड, लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर देयर, बट इफ यू टेक द मनी फ्रॉम आउटसाइड, बी इट बिजनेस और एक्सेट्रा, उसमें ज़्यादा कम कॉम्प्लिकेशन है. बैंक ने पैसा फंसाया वो अलग बात है, वो दैट इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन इन द रेगुलेटरी वाइज, वो बैंक का प्रॉब्लम था, वो 5 दिन में हो सकता था. सो दैट्स so now coming to the thing, like while you grow your startup, like from build the product, पहला राउंड रेज हो गया 50-60 लाख रुपए, and the problem arises कि you all three are in, say suppose B2B, B2C, SaaS, or we can say as software business. In India now we are seeing a wave कि software businesses बेचना भी बहुत difficult हो चुका है आज के टाइम पे. पहले क्या था, बनाना difficult था, जब तुम लोग बनाया तो तुम लोग का बन ही नहीं रहा था. करेक्ट. अभी तक भी बना ही रहे हो फॉर एग्जांपल, बट तुम लोगों ने बेचना सीख गए. इन लोगों ने बना लिया, इनसे बेचने में अब थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा है. इसने बना भी दिया और बेच भी रहा है, तो इसके अलग प्रॉब्लम्स है. अभी आफ्टर द टाइम व्हेन यू आर बिल्डिंग इन द इनिशियल डेज, ग्रोइंग योर कंपनी 2025-26 की अभी से बाद से, व्हाट डू यू सी कि सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? मतलब नॉट फॉर योर बिजनेस, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सेप्ट, कोई भी इंडस्ट्री में हो, कौन से सेक्टर में हो, क्या भी प्रॉब्लम्स है जो जेनरिक वे में एक प्रॉब्लम सी बन चुकी है? Distribution, that's all I think everyone should agree on. Tech is not a moat now because of AI, ChatGPT, Claude and whatnot. The time period which you were supposed to complete a couple of sprints in, let's say 6 months, now you can do it in 6 weeks, even less than 6 weeks. So tech, it became very easy, and I'm saying this as a tech guy itself, has been in the ecosystem for almost 5-6 years. Tech is not a moat. Now distribution is the real game. We have built the product, and we believe we have built one of the strongest product. And as Rishav mentioned, where we are struggling at, I'm being very honest here, figuring out the distribution. We work with 500 clients. Now we want that scale where how can we sort of make this business grow 10x, 500 brands to 5,000 brands. So this is the distribution, the GTM, the sales, the marketing we are trying to figure out. Yeah, exactly. And also I agree with that point as well. So initially we started off as a like consumer product, right? End consumer, and in fintech and consumer, it's really hard to crack unless and until you have a lot of incentive, cashback and all, right? So we did that, but because our product was something which people wanted, so we didn't have that friction of like, oh, we need to give a lot of discount or cashback, right? So we were solving a really that big was the problem, need of our product, right? Yeah. So but recently we also pivoted into B2B, like infrastructure and those spaces because of regulatory issues. So like nowadays building product is not an issue. So we shipped the product in just 1 week, and we are live, and we are doing like really good GMV, right? The only thing which we had the advantage is being prompt. So if the client is saying I need this, and we were the one like, oh, okay, let's do it right now. So we fix things on the go, and thanks to AI, you can ship at insane speed. That is the moat. I believe right now, any business who is starting up, like any founder, your speed should be your moat, right? And that's what we were fortunate enough that we had that client with us, and we did a lot of fuck up because we didn't know how to build this, how to do this business, right? So we did a lot of fuck ups, and eventually there was a point I thought I'm gonna lose this client.
But because we were so prompt and they were not able to like find someone who can just ship at our speed, so they stick to us and they're still with us. I will ask you, but since you talked about regulatory, so do you think that regulatory is a bigger problem for your business in India, and you keep blaming about regulatory in India running a fintech company? No, it depends. So the thing is, India is a huge country, and we have a lot of our own like national security risk, right? Yeah. So and because we are in fintech, and fintech is something which is really like risky business, right? Serious business. So they have to be cautious, right? And it's like kind of a, like we come into the radar because they don't have any options in fintech. Everyone gets scrutinized, right? So that's the reason why we have our parent company, like the holdco is in like US, because they have much more reliable like infrastructure, and also the regulatory is also much more simpler as compared to India. So I don't blame like regulators, but yeah, anyone who's building in India, any fintech has to work hand in hand with regulators. You cannot like skip regulators. Your take on that, SaaS, growing an enterprise or a software business in India now? Cool. I think the biggest problems or the reasons most of the startups fail is because they have not done enough market research, they have not thought it through. वो एक्साइटमेंट में आके बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, और जब स्टार्ट कर देते हैं देन दे रियलाइज कि ये तो प्रॉब्लम ही जेन्युइन नहीं था, बंदा बोल रहा था कि प्रॉब्लम है. सो वन थिंग विच यू शुड ऑलवेज डू व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू कंपनी, आपको जीटीएम क्रैक करना है, प्रोडक्ट क्रैक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए कस्टमर पैसा भी दे रहा है, एफर्ट भी डाल रहा है, टाइम भी वेस्ट कर रहा है, फिर भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है. वो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा बेकार प्रोडक्ट में भी बिजनेस बन जाएगा, तुम्हारा काम अच्छा नहीं भी होगा, टीम अच्छा नहीं भी होगा, तब भी तुम्हें पैसा आने लग जाएगा, एंड विद दैट यू कैन इवेंचुअली फिगर आउट. दैट्स व्हाट आई डिड. व्हाट आई वाज सॉल्विंग द जो प्रॉब्लम हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं वो ये था कि जो व्हाट्सएप अकाउंट्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं. जो बड़े प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो मीडियम बिजनेसेस को सपोर्ट करें. एसएमबीज को हम भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं था. तो आई हैड टू थिंग्स इन माइंड. एक तो प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व करना है जिसका पैसा मिलेगा, कस्टमर के पास इंटेंट टू पे और कैपेसिटी टू पे दोनों हो. तो हमने एक वो मार्केट सेगमेंट चूज़ किया, उनके लिए प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया. इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा टेक मोट नहीं था, हमारे पास कोई प्रोडक्ट बेस्ड यूएसपी नहीं था टू टेल कि ये हमारा यूएसपी है, इस वजह से हम बाकी सबसे अलग है. लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्लियर था जो हमें सॉल्व करना है. वो प्रोडक्ट में नहीं था क्योंकि हम लोग को टेक बनाना नहीं आ रहा था. तो हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारी कस्टमर सक्सेस टीम थी वो हमारी बहुत अच्छी थी, तो वो उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी. इवेंचुअली वो जो सारे कस्टमर ऑपरेशन था अब वो हमने सब प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब कर लिया है. तो ना जो चीज़ें करने में हमारी टीम को किसी कस्टमर के लिए 3-4 हफ्ते लगते थे या उनको लगते थे, अभी एक ही बंदा वो 15 मिनट में सब कर देता है जस्ट यूजिंग द प्रोडक्ट. तो वो इवेंचुअली बिल्ड हो गया क्योंकि मार्केट इनसाइट सही थी. तो वी सॉल्व अ गुड प्रॉब्लम जिसके लिए कस्टमर्स हमें पहले से पे कर रहे थे. तो पैसा हमने बहुत पहले बनाना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट अच्छा अब बनाना शुरू किया है. I'll product have अच्छा to बना है. partially agree, I would say here, because the thing is, you can reach out to 10 customers, you can reach out to 50 customers and 100 customers with your one of the greatest product. But how can we make this 100 to 10,000? There comes this distribution problem. So as you said it right, in the initial stages, product means everything. Tech could be important also. The problem, again, its problem is the biggest, I think, I would say moat, right? But the moment you come on a scale where the goal is to 10x your business, if you have not been able to figure out the distribution, आपको वहाँ पे आपकी लगेगी honestly. And we are facing the challenge. I'm pretty sure कि कोई भी startup हो जो in 2025 we did 200 crores का GMV. Now if I'm planning कि by the end of 26 how can I make 500 crores का GMV, this is where we are struggling with. We know we can easily crack 200, 300 भी हम कर लेंगे, मैं 500 से 800 कैसे करूँ? So this is the distribution what we are abhi trying to figure out. And one good part is कि we have not raised, so we are थोड़ा सा slow. Good part is कि we थोड़ा सा raised ना? थोड़ा सा raised also. So we are good part is कि हम अपनी pace से चल रहे हैं, हम अपनी speed से चल रहे हैं. And the bad part is कि हम अपनी pace से चल रहे हैं. ठीक है? We cannot go 10x कि हमने अच्छा पैसा डाला और distribution करे. So distribution is also related to the paisa also, how much money you have in the like bank. in all the cases. For first I will ask to Aman and then to Saad and then Azim, क्योंकि सबके ऐसे products. Do you think कि products are very important? पहले बेचने से पहले product बहुत ज़्यादा जरूरी है. बिना product के भी तुम बेच सकते हो क्या? Yes, I think yeah. कैसे? We can sell. So it depends on like
See, if you remember Stripe ka, like story, so when Stripe was at early stage, there was nothing, no tech was built. The founder used to go and say कि हम आपका integration कर देंगे, and they go by themselves. They didn't have any engineers. They go and sit the company's like office and do the integration by themselves directly to bank APIs and like hacky way, right? They didn't have any SDKs and nothing was built there. And recently we also did like this pivot, B2B pivot. The client asked the like SDK or API. I said API तो भी नहीं build कर सकते, but I can give you some like payment link or some checkout system which is like hosted on our platform. It will solve your problem. So always have that mindset that can I solve client's problem or the end customer's problem as fast, like कैसे मैं जल्दी से जल्दी उसको solve कर सकता हूँ, not like in a fancy way. Later I can build other stuff. So that is, I guess. We have one question from Sivang also. Contrarian thought. In today's time when we keep saying tech is not the mode anymore, it's becoming easier and easier to build products. Talking just doesn't cut it anymore. अगर आप किसी के साथ बैठे हो और आपके पास एक proof of concept नहीं है, कुछ visualized product नहीं है, nobody is interested. I'll give you one very interesting question. I'll give you one very great case study. What has happened? Have you? I mean, we all have heard about this company Trio. Try fashion in 60 minutes. You know how did they scale? They did not have a product. They just built one simple user interface. And what they used to do is, so these Levi's and Allen Solly and all, what they have this policy कि आप कपड़े खरीद सकते हो और अगर आपको नहीं समझ आए तो आप रिटर्न कर सकते हो. They have that policy. So Trio ने क्या किया? कुछ भी नहीं था उनके पास. उन्होंने बस सबमिशंस ले लिए. वो खुद जाके अपने पैसों से लेवाइस के कपड़े खरीदते थे और खुद जाके डिलीवर करते थे और 60 मिनट वेट करते थे वहीं पे. और जब उनको समझ आता था कि यार ये अच्छा एक कपड़े रख रहा है बंदा, 3-4 वापस कर रहा है, वो 3-4 लाके लेवाइस को वापस करते थे, फिर अपना मनी कलेक्ट करते थे. उन्होंने स्टार्ट ऐसे किया. उन्होंने जब 100 लोगों को ऐसे सर्व कर दिया, then they built a product which is Trio now, raised good amount of funding and they are doing really well abhi. I agree with you, but my point of view was in context with software company who was selling digital products to it. अगर आप किसी के साथ एक मतलब simple सा conversation भी करते हो ना कि this is what I am planning to build, it literally takes an hour to get a something visual कि okay this is how it will work or this is how the flow would look like. So for software products, I don't think conversations cut it anymore. Yeah, for software business it will not cut. For sure. For digital products, I agree. See, this was a different case of Trio. Okay, for software products, obviously. पैसा दिया इसको बहुत. No, when we say tech is not a moat anymore. The thing is, what we are trying to convey, there are multiple apps. If you can think of the problem in your mind clearly, ठीक है, if you can type that problem clearly, something you can build out of all these lovable, emergent, and those tools, right? That would be the talk of the town. So it's more of like how I can solve this problem the like quickest way, like how fast I can solve this problem. It shouldn't be like the fanciest solution. It just like it gets the job done. Build That's a it. POC, do the Yes. things that See, don't scale. in all this, my take will be always different because 1.5 साल मैंने प्रोडक्ट ही नहीं बनाया था. तो अभी के टाइम पे प्रोडक्ट बना, उस समय प्रोडक्ट बनाना वाज वेरी डिफिकल्ट वर्क. 2017 प्रोडक्ट बनाना मतलब तुमने प्रोडक्ट बना लिया, लोग ऐसे हो जाते थे. और अब तो प्रोडक्ट बना लिया तो उतनी इज्जत नहीं है प्रोडक्ट की. तो इट्स मोर अबाउट कि हाउ यू आर गोना स्केल. Scaling an app business till 2022 was certainly easier. अब तो ऐप बिजनेस चलता भी नहीं है मुझे लगता है कम से कम. Getting an app user का स्क्रीन में स्पेस लेना is very difficult. That's true. पहले तो हो भी जाता था कि चलो ठीक है अब तो दुनिया भर के apps है. So like you in your particular case your product was required. It's your industry. In his case the entire product was not required. In his case product is required, some kind of something can be done. In my case, even if without product also I can do. Right. But I wanted a product because I wanted to scale the business. So, but when we talk about this particular point today, that do we need a money to build a product in 2026? एक point बताना, ज़्यादा इसको stretch नहीं करेंगे. Do we need money to build product in 2026 or do we need money to grow the business in 2026? I would say, both are contradictive point and it depends. ठीक है. To build the product, no, obviously you don't need money. We have built when we were working somewhere else, right?
we were true to that job, then we were taking out time to build the product. So yes, keeping it short, you don't need money to build the product. You might not need money to grow the product, but if you want to achieve the hyper growth, that 1x to 10x, yeah, then obviously you need some money. And also I think it depends on the industry which you are building. For instance, like you are building an infrastructure company, right? You are building some regulated space. There you need money because you don't know like how long it will take for you to like get the first dollar in the company as a revenue, right? So in our space we were building like cross-border thing. So here also you need to do a lot of partnerships. You need someone to just who can just do the, you cannot build fintech products without like collaborating with banks and the regulators. So there you need someone who can just go out and then talk to these people. So it adds a cost, right? Yeah. So in our case, we needed it from day zero because we need to partner with banks, we need to partner with PSPs, and on top of that, we also have a tech cost, right? So in terms of tech cost, nowadays building POCs is absolutely free. You can go on Lovable or V0 or Replit. You can build the entire product, right? But when you're building in a very regulated space like ours, you can't take the chance, right? So you have to do it the right way. So that's what we have to do it. So we raised and we built the product. I think यहाँ पे I would want to highlight a very important point जो बहुत बड़ा myth है, I think almost everyone has. सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने में होता क्या है, मुझे प्रोडक्ट बनाना है, मुझे एक पेमेंट प्रोसेस करनी है, एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, तो मैं बहुत कम में भी बना सकता हूँ. तो प्रोटोटाइप बनाने में कुछ नहीं जाता, कॉलेज का इंटर्न भी आके प्रोजेक्ट बना के चला जाता है सबमिट करके. बट वहीं अगर आपको एक स्केलेबल प्रोडक्ट बनाना है जिसका एक अलग स्केल है, जैसे जब हम लोग प्रोडक्ट बनाना शुरू किया था तो पहला हमारा वर्जन बहुत फुद्दू था, हम लोगों ने 2-2.5 लाख रुपए में बना लिया था. उस पर कस्टमर भी आ गए थे, इन्वेस्टर भी आ गए थे, फंड भी रेज हो गया था. चलता नहीं था वो. तो मतलब मैंने क्या फुद्दू प्रोडक्ट में पैसे डाल दिए थे. हाँ, जापानीज ने भी फुद्दू प्रोडक्ट में डाला. This is the skill of selling skills ना. I got my first investor before I had the company registered. I got my first institutional investor before I had even $1 in revenue, and I got my first customer even before I launched the product. So I believe कि building first, selling later, and this I have tried multiple times. I always do this. अभी recently we were trying to do a new pilot, वहाँ पे भी यही किया, पहले कस्टमर को पिच कर दे कि ये करने वाले हैं. सो आइडियाज़ कि कस्टमर को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, उसको प्रोडक्ट या सर्विस से नहीं मतलब है. सो सर तुमको ये चाहिए, तुमको मिलेगा. फिर एक हफ्ते तक हम सोच रहे हैं कि करेंगे क्या इसका एग्जैक्टली. उसको तो बोले थे कि हफ्ते में शुरू हो जाएगा. 5-6 दिन वी स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि जो भी है चलो शुरू तो करते हैं, कुछ तो होगा, एंड देन वी डिलीवर्ड. बट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर इज, अगर तुम्हारे पास कम पैसे हैं तो तुम एक प्रोटोटाइप वगैरह बना के उसको वैलिडेट करा सकते हो, थोड़ा बहुत पैसा कमाओ. क्योंकि वही है कि तुम ऑटो से भी A2 भी जा सकते हो, उबर ब्लैक से भी जा सकते हो, मर्सिडीज से भी जा सकते हो. तुम्हारे बिजनेस में तुम्हें मर्सिडीज चाहिए, F1 कार चाहिए, ऑटो चाहिए, और जो तुम्हारा बजट है उसके हिसाब से स्टार्ट करो. तो बहुत सारे पैसे में भी अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है, कम पैसे में ठीक ठाक प्रोडक्ट बन सकता है. तो स्टार्ट तो कर ही सकते हो. मैं तुम तीनों से वापस से बात करूंगा. सो सिंस ऑल थ्री आर ऑलवेज अ गुड बिलीवर कि डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डिस्ट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम कम्युनिटी एंड कंटेंट. तो आई हैव 3 more फ्रेंड्स ओवर हियर, हिमांशु, पारुल एंड इशिता. मैं उनको बुलाऊंगा अब. तो विल टॉक अबाउट विद देम अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन इन कम्युनिटी, और उसके बाद फिर से विल टॉक मोर अबाउट द फन पार्ट ऑफ द फाउंडर्स. ठीक है.